हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू डूइंग गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी विंडोज़ स्क्रीन पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी विंडोज़ की लैंग्वेज को कैसे चेंज करें। हाउ टू चेंज योर सिस्टम लैंग्वेज इन विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। इट्स वेरी इजी। व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट गो टू योर विंडोज़ बार एंड प्रेस राइट क्लिक, गो टू सेटिंग्स। Okay, so this setting will pop up, and then what you need is go to time and language. टाइम एंड लैंग्वेज में जाएं। ओके, टाइम एंड लैंग्वेज में जाने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर ये कि लैंग्वेज एंड रीजन शो हो रहा है। यहाँ पर जाएं, इस पर क्लिक करें आप। ओके, सो आफ्टर यू क्लिक ऑन टाइम एंड रीजन। Okay, so as you can see here, there is an option add a language. So our right now our default Windows language is English from United States. We need to change that. To change that, just press on add a language. So जब आप add a language पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पर आप वो लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए वो आप टाइप करो। लेट्स जस्ट से हिंदी, INDI। तो यहाँ पर ये देखें हिंदी, ये इस पे आप क्लिक करें एंड देन प्रेस नेक्स्ट। ठीक है। ओके, आफ्टर प्रेसिंग नेक्स्ट सो यू कैन सी हियर ये एक लैंग्वेज पैक डाउनलोड करेगा 14 MB का, और हैंड राइटिंग इज़ 1 for 1 MB। So if you want to immediately set as your Windows language, set Hindi as your Windows language, just check on this one. Okay, after downloading it will set it directly. Okay, just press on install. So this was for the Hindi users that who need their language in Hindi, who need their PC's language in Hindi. Okay, this is for them. So later we'll download for हम लोग बाद में उर्दू लैंग्वेज भी डाउनलोड करेंगे ताकि हिंदी यूज़र और उर्दू यूज़र both can download. Okay, so language is already downloaded. You can see from here there are two languages now. एक फर्स्ट नंबर वाली इंग्लिश है और द सेकंड वन इज़ हिंदी। ओके, नाउ लेट्स डाउनलोड उर्दू। ओके, लेट्स ऐड अनदर लैंग्वेज। I'll type Urdu. So there are two languages. One is from India and the other one is from Pakistan. Both of them are same. Just I will go for Urdu Pakistan and press next. Okay, install. ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, not a minute also, few seconds only. It depends on your PC speed. तो लो जी गाइस, ये डाउनलोड हो गया हुआ है। तो ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट go to your Windows display language and press click. You can see there is one Hindi and there is one Urdu language. Whichever you need, just press on that, click on that, and your PC will refresh automatically. So yeah guys, that's how easy it is. I hope that you understand. uh, so if you like the video, please comment and subscribe my channel. For now, that's it guys. Thank you. Bye.